Good morning everyone. Welcome to MatSciOdia. ମୁଁ ତମମାନଙ୍କର ସମ୍ବିତ ସାର୍ ପିଲେ ତମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଜୁଲୋଜି କ୍ଲାସ କୁ। ପିଲା ଆଜିର ଜୁଲୋଜି କ୍ଲାସ ରେ ଆମେ ମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ସ କରିବା ହ୍ୟୁମାନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ। ତ ମୁଁ ମୋର ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ ଗୁଡ଼ିକରେ ତମମାନଙ୍କୁ ହ୍ୟୁମାନ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ସ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଆମେ ମାନେ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ 2 ମାର୍କ ଏବଂ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ବା ଟର୍ମ ବିଷୟରେ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯାହାକି ତମମାନଙ୍କର ଅତି ଜାଣିବା ଦରକାର ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହାକି ତମମାନଙ୍କର ନେଟ୍ ଏକ୍ସାମ ହଉ କିମ୍ବା CHSE ଏକ୍ସାମ ହଉ ଏଥିରେ ସେ ଟର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ଆଶା କରିବି ତମମାନଙ୍କୁ ଆଜିର କ୍ଲାସଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଏବଂ ତମେ ମାନେ କ୍ଲାସଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବ। ତ ବିନା କୌଣସି ଡେରି ନ କରି ଆମେ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପିଲେ ଆମର ଆଜିର ଏଇ କ୍ଲାସଟିକୁ। ଠିକ ଅଛି, ଓକେ। ତ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଡିସ୍କସନ୍ସ କରେଇବି କଣ ପିଲେ ନା ହ୍ୟୁମାନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ତ ହ୍ୟୁମାନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରେ ଆଜିର କ୍ଲାସ ତମର କାହା ଉପରେ ରହିବ ପିଲେ ହ୍ୟୁମାନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ତ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାର ଅଛି ହ୍ୟୁମାନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟି କଣ। ଦେଖ ପିଲେ यो ହ୍ୟୁମାନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟି ହୋଇଥାଏ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିବା ହ୍ୟୁମାନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଧିରେ କଣ ମାନେ ଦେଖ पूरा फॉर्मेशन ऑफ गैमेट कतुरु नेकी आफ्टर चाइल्ड बार्थ जो पूरा प्रोसेस रहिला सेटा ही ह्यूमन डेवलपमेंट रे आसे। हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन परे पढुछन। तो प्रथमे आसला कोन पिले गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन गोनाड्स हैला बुझ पाइलो माने जो प्रोसेस रे गैमेट गुडिकर फॉर्मेशन होउची कोउटी गोनाड्स रे। गोनाड्स कोन दैट इज द मेल केस रे टेस्टिस आउ फीमेल मान केस रे हैला ओभारी। तो से प्रकार केस को बा से प्रकार कंडीशन जो रहउची ताकू ही हमें माने कहउछथि कोन पिले ना गैमेटोजेनेसिस। आउ ये गैमेटोजेनेसिस पिले तमरा दी प्रकार गोटे हला स्पर्माटोजेनेसिस एंड oogenesis in male and female respectively। बुझिले समस्ते, बुझी पाइल? अच्छा, तो इट इज टू टाइप्स, या होउची दी प्रकार। गोटे हला कोन पिले स्पर्माटोजेनेसिस आउ गोटे हला पिले oogenesis। गोटे हला स्पर्माटोजेनेसिस आउ गोटे हला oogenesis। तो स्पर्माटोजेनेसिस ता हेता कोडी पिले टेस्टिस ऑफ मेल, ये होता है ओभारी ऑफ फीमेल हैला बुझी पाइला। तो प्रथमे हमें माने पढिया पिले कोन ना स्पर्माटोजेनेसिस ऊपर। तो ये स्पर्माटोजेनेसिस टी कौन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स और स्पर्माटोजोआ और स्पर्म इन टेस्टिस। देखो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स और स्पर्माटोजोआ और स्पर्म माने एठी मेल गैमेट टी जहा स्पर्माटोजोआ टी सेया आउ स्पर्म मदो सेया। स्पर्माटोजोआ आउ स्पर्म ए दीटा जांक सेम जिंस बुझी पाइला। तो ए दीटा जांक सेम जिंस कोउतरे ना टेस्टिस रे। अच्छा, जदि मु तमनकु कौन करी पिले ना जो हमर जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स रहिला यदि तार तमनको मु डायग्राम करी के देखैबे ताले किछि स्ट्रक्चर एई टाइप रो रहइबे। जेतु हमें माने एकना स्पर्माटोजेनेसिस ऊपर
पढ़ुछन तो ये ट्रांसपोर्ट सेक्शन आम ने तो से ट्रांसपोर्ट सेक्शन तो तुम देखिबो ए भलिया किछि कोन टाइप रो सेल तुम माने पाइबो ता देले कोन पाइबो कोन भलिया सेल किछि पाइबो तुम माने ए टाइप रो हैला एवं सेथरे तुम माने न्यूक्लियस अछि तो ए प्रकार सेल को हमें माने कोन कहउछन पिले आको हमें कहउछन कोन पिले ना सर्टोली सेल आ कोन कहा जाउची सर्टोली सेल बोली कहा जाउची अच्छा एटा तो लेयर अछि बुझी पाइला अच्छा तो एटा को हमें कहउछन कोन पिले एटी से सेल गुडी को एमती रहितिबो लाइन हे कि एमती ए बडिया एमती रहितिबो हैला 80 ये ला मैच्योर स्पर्म दीज आर द मैच्योर स्पर्म बुझिला अच्छा तो याको हमें माने कहउछथि कोन एटा लिखि टिके जो गाराटा देछि दैट इज प्राइमोडियल जॉर्म सेल हैला अच्छा एगुडी को कोन ना दीज आर एगुरा दिस एगुरा ठिउरा अछि ये हला कोन पिले ना एटा स्पर्माटोगोनिया और एटा हला स्पर्म बुझिपाल हला सेमिनिफेरस ट्यूब बुझिपाल तो अच्छा तो यदि आम देखा स्पर्माटोजेनेसिस उपरे तो एइठी ही स्पर्माटोजेनेसिस टा होई थाए पूरा जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल बा स्पर्म मदर सेल कतुरु पूरा स्पर्म हबार पर्यंत गोटे मैच्योर स्पर्म आसिया पर्यंत पूरा प्रोसेस टा रहिला ताको ही आमे माने स्पर्माटोजेनेसिस बोली कहउछन्ती स्पर्माटोजेनेसिस तो स्पर्माटोजेनेसिस दीटा स्टेप्स रहिते गोटे हला स्टेप 1 आ गोटे हला स्टेप 2 स्टेप 1 कहउची कोन ना फॉर्मेशन ऑफ माने स्पर्माटोजेनेसिस टा दी भाग रे भाग होई गला गोटे स्टेप 1 प्रोसेस अछि गोटे स्टेप 2 प्रोसेस अछि तो स्टेप 1 प्रोसेस कहउची फॉर्मेशन ऑफ स्पर्माटिड आ 2 कहउची कोन स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्माटोलियोसिस बुझिलो स्पर्मियोजेनेसिस जहा स्पर्माटोलियोसिस मध्य सेया जदि तुम माने फॉर्मेशन ऑफ स्पर्माटिड विषय रे देखिबा को जिवो एटा तमरो तीनटा प्रोसेस को नेकी तयारी हेइछि गोटे हला कोन मल्टीप्लिकेशन फेज गोटे हला ग्रोथ फेज आ गोटे तमर हला कोन बले ना मैच्योरेशन फेज हैला बुझिलो समस्ते तो एई भली भाबरे तीनोटी फेज को नेकी एठी तमरो कोन हेछि पिले ना स्टेप 1 प्रोसेस बा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्माटिड फेज ता तमरो कंप्लीट होइताय आ स्टेप 2 जोटा रहिला दैट इज द स्पर्मियोजेनेसिस बा स्पर्माटोलियोसिस बोली आमे आकू कहउचंती तो एक्चुअली एथरे हुए कोन ए जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्माटिड टा एबे आमे देखिबा एवं तार जो रहिला पूरा कोन पिले
डायग्राम ताको मु एबे तम मानु केठी बतै देमी सेठी एक्चुअली कोन होउची। तो एबे हमें हेडिंग दबा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। अच्छा एबे मु तमन को स्कीमेटिक डायग्राम रे बुझे दोची केमती स्पर्म पर्यंत बुझे दोची गुटे ये रे एटा स्पर्माटोजेनेसिस रो पूरा प्रक्रिया हला। स्पर्माटोजेनेसिस रो पूरा प्रक्रियाटा मु तम मानक फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड पढिया पूर्वरु आमे माने कोन करिवा ना तर पूरा प्रोसेस टा को मु तम मानक एठी गोटे शॉर्ट डायग्राम माध्यम रे मु बुझे दोची। तो प्रथमे एठी कोन टू एंड सेल टा थाए। तो एठी प्रथमे कोन होची तो हमरो गुटे एटा हला ए जो टू एंड सेल टा एटा हला कोन कहले जेटा सेमिनिफेरस रो जो लेयर अछि तो जो आउटर लेयर ठीक तळुकु एटा रही थाए जेटा तमे प्राइमरी जर्म सेल बोली कहि थाओ। कोन कहि थाओ प्राइमरी जर्म सेल बोली हुआ जाइते। तो एठी तमरो कोन हो बिले ना माइटोसिस होबो। तो ये प्राइमरी जर्म सेल प्रथम ये मल्टीप्लिकेशन सब बुझिलो गोटे सेल दीटा सेल माने माइटोसिस एटी हबो ए जगह रे माइटोसिस हबो बुझे तो। ये जो पूरा फेज ता तमरो रहउची एटा कोन ना मल्टीप्लिकेशन फेज। एटा की प्रकार फेज ना मल्टीप्लिकेशन फेज। अच्छा एथरे आसीबो कोन कोन तयारी हबो एथरे तयारी हबो कोन प्ले ना स्पर्माटोगोनिया। एथरे स्पर्माटोगोनिया तयारी हो बुझि पाइलो। तो तमे माने जानिचो जेतले एटा स्पर्म केस अछि बा मेल लो केस अछि माने एटी सबु जाक स्पर्माटोगोनिया होची फंक्शनल बुझि पारछो तो। तो एथरे कोन हबो हमें गोटिए 2n को बा गोटिए सेल को हमें माने एरा सब गोटे गोटे सेल हला कंसीडर करिया 2n माने तार क्रोमोसोम नंबर टा सेठी रिप्रेजेंट करूची। तो आसला एमि सबु जाक सेल माने एटा ये भी हेई पारे माने एटा ये भी हेई पारे एटा तमरो ये भी हेई पारे एटा तमरो ये भी हेई पारे एमान को गोटिए को तमे माने कंसीडर कर हला कि। तो प्रथमे कोन हबो ना तार ग्रोथ हबो कोन हला ना ग्रोथ हला। तो ग्रोथ हबो माने तार कोन हबो साइज टा टिके इंक्रीज हबो। तो साइज टा टिके इंक्रीज हबो नै कि। तो मेयोसिस को जीवो सी हेबे meiosis 1 that is meiosis 2 ये हला meiosis 1 ये हला meiosis 2। एबे एठी तमरो पिले पळि आइला कोन एटा को हमें माने कहउछथि कोन ए जोटा मैच्योर हेई साइला परे माने ग्रोथ हेई साइला परे एटा को हमें कहबा कोन पिले ना प्राइमरी। प्राइमरी माने मैं एमति लिखि दउची 1 डिग्री स्पर्माटोगोनिया प्राइमरी स्पर्माटोगोनिया। एंड सेकंड आउसी एटा को हमें कहबा कोन पिले सेकेंडरी। एटा प्राइमरी एटा को हमें माने कहि परिया कोन पिले ना सेकेंडरी स्पर्माटोगोनिया। अब आकु तमे माने कहि परिया कोन पिले ना स्पर्माटिड। कोन कहइबो स्पर्माटिड। तो एटा पूरा एटा ला ग्रोथ फेज हला एटा ग्रोथ फेज। अब ए जो फेज टी रहिला ए जो फेज टी आकु हमें कहउछनी कोन पिले ना मैच्योरेशन फेज। आकु कोन कहइबा मैच्योरेशन फेज बोली कहइबा। तो एटी सबु जांक तमरो स्पर्माटिड होउछनी फंक्शनल एमान को भितर केही भी डिजेनरेट करिवे नाही बुझि पाइले कि। तो जते बेले स्पर्माटिड रो फॉर्मेशन टा हेई जाउची हेई साइला परे एटा तमरो पुनी कहबो तार स्टेप 2 को पळि आसीबो। स्टेप 2 को पळि आसीबो जोटा कोन हबो ना ए जो नॉन मोटाइल जो सेल सब रहिले एगुडा नॉन मोटाइल माने मोटाइल करि परबेनी एमाने समस्ते मोटाइल सेल बा स्पर्म को कोन होबे ना परिवर्तित हेबे ए प्रोसेस रे बुझि पारछो तो समस्ते हेला। अच्छा तो यही प्रकार प्रोसेस को एक प्रोसेस को हमें माने कहते कोन ना स्पर्मियोजेनेसिस। कोन कहबा आकु हमें कहबा स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मियोजेनेसिस।
जेनेसिस बोली कहबा पढेबी ए जिंस मु तमनको पढेम पूरा डिटेल्स रे ही पढेबी तो स्पर्मेटिड रो फॉर्मेशन जो रहिला इट इन्वॉल्व थ्री फेजेस केतुटा तीनटा फेजेस रे यह संपादित होई थाए सच एज कौन कौन ना गोटे हला तमर पिले कौन मल्टीप्लिकेशन फेज गोटे हला पिले कौन ना ग्रोथ फेज आ गोटे होची पिले कौन ना मैच्योरेशन फेज तो मु तुम मानकु टिके टिके ए सब फेज विषय रे कही दउचे तो देखो पिले जो मल्टीप्लिकेशन फेज अछि सेठी कोन होउची ना प्राइमरी जर्म सेल आको हमें लिखिबा नेक्स्ट क्लास रे हला तमरो कारण एटा लॉन्ग क्वेश्चंस ना मल्टीप्लिकेशन फेज रे कोन होउची ग्रोथ फेज रे कोन होउची मैच्योरेशन फेज बोल से लिखि तो खाली मु तुम मानकु समराइजिंग करी कि याको कही दउचे तो मल्टीप्लिकेशन फेज रे कोन होउची प्राइमरी जर्म सेल रहिला से प्राइमरी जर्म सेल तमरो कोन होउची पिले ना मल्टीपल होउची 2 4 6 8 एमटी सॉरी 2 4 8 16 32 64 एमती हे चलना 2 4 8 16 32 64 एमती हे के चलियो बुझी परछ तो एवं सेथरु तयारी हबो कोन पिले ना स्पर्मेटोगोनिया तीनटा फेज रहितै तो मैच्योरेशन फेज रो प्रोडक्ट होउची कोन स्पर्मेटोगोनिया आ ये जो स्पर्मेटोगोनिया ता ग्रोथ हले कोन हबो तार सेल मास इंक्रीज होउची ता भितरे सब्सटेंसेस गुडी को इंक्रीज होउचंती तो ग्रोथ हेई साइला परे स्पर्मेटोगोनिया तमरो परिवर्तित हबो कोउडी की ना प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया को परिवर्तित हबो हैला एमसीक्यू आसीबो आफ्टर द ग्रोथ फेज spermatogonia convert to primary spermatogonia comes from primary germ cell from mitosis माध्यम रे meiosis नो माइटोसिस एटी स्पर्मेटोगोनिया तयारी होउची माइटोसिस माध्यम रे से कोन करूची ना तमर एठी जाउची बुझी पाइलो अच्छा तो जेतले तो पुनी प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियाटा पुनी अगेन जेतले से मेयोसिस को जीवो माने ग्रोथ फेज परे तो मैच्योरेशन फेज को आसीबो तो स्पर्मेटोगोनियाटा कोन होबो पिले ना सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया जोटा प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया थिला सेटा सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया को पुनी थरे कन्वर्ट होबा आफ्टर मेयोसिस 1 हेई साइला परे सेटा सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया को कन्वर्ट हबो आफ्टर मेयोसिस 1 तो पुनी मेयोसिस 1 परे मेयोसिस आमे माने समस्त जानते जेतले अर्ध विभाजन होउची सेतेबेले सेटा दीटा फेज रहिता सपोज यदि गोटे सेल अछि से यदि तमरो कोन होउची ना मेयोसिस को जाउची तले से कोन हबो पिले ना सेठी दीटा डिवीजन हबो फर्स्ट जोटा होय त हमें रिडक्शनल डिवीजन बोली कहितो रिडक्शनल डिवीजन देन तापर जोटा होइता ताको हमें इक्वेशनल डिवीजन बोली कहितो माने एटी माइटोसिस हो एटी देखो क्रोमोसोम नंबरटा कमी गला एटी जोटा हला कोन हला ना जहा क्रोमोसोम नंबर थिला सेटा हे की रहिला बुझुचो म कथा सब तो ये पूरा होउची तमरो पिले कोन ना फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया आ सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया हैला देन तापरे कोन हो पिले ना स्पर्मेटिड रो फॉर्मेशन हो मेयोसिस 1 परे तो सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया आसुची सेते बेले मेयोसिस रो 2 माध्यम रे ता तमरो स्पर्मेटिड को कन्वर्ट होउची एवं से स्पर्मेटिड देन तापरे नेक्स्ट को कोन होउची पिले स्पर्मियोजेनेसिस माध्यम रे गोटे मोटाइल स्पोर को परिवर्तित होउ जंती एटा सब कोन ना एरा सब स्पोर्स हैला ओके तो ये थिला आजिरो क्लास आशा करछि तम माने क्लास टी बहुत भल लागितिबो तो नेक्स्ट क्लास रे हमें माने फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड ऊपर डिटेल्स डिस्कशंस करिबा मल्टीप्लिकेशन फेज ग्रोथ फेज मैच्योरेशन फेज आर कोन कोन सब इंपोर्टेंस पॉइंट हबो मु ता ऊपर तम माने को डिस्कशंस करेबे तो ठीक अछि पिले नेक्स्ट क्लास रे देखा हबा से पन्द पई समस्त धन्यवाद समस्त भल रे रुओ आ समस्त को ऑल द बेस्ट तम मानकर एग्जाम प्रिपरेशंस पई थैंक यू पिले थैंक यू सो मच